जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। प्रीवियसली आप यू हैव स्टडीड मैनी methods to approximate the root of the nonlinear equations. One of the most important method is called the fixed point iteration, and one of the most easiest method in the field of numerical analysis called the fixed point iteration. This method is also used to approximate the root of the nonlinear equation f of x equal to 0. What fixed point iteration method will do? This method will do some rearrangement of the nonlinear equation f of x through some algebraic manipulation. This method will update your nonlinear function f of x through some algebraic manipulation like this x equal to g of x, or also you can say that you can transform f of x to in this form x equal to g of x. You can rewrite this as an iterative scheme like xk minus 1 equal to g of xk, or you can also write this xk equal to g of xk minus 1. एक ही बात होगी. Okay, now consider the method. This is your some algebraic manipulation, and also you can say that all say that okay, all this is the method. Okay, now you can implement this method on an example which you have solved earlier. You have the equation, let's say f of x cube minus 4x minus 5 equal to 0. You can say that this is your f of x. Implement the fixed point iteration on this method. Okay, same concept that you have to check the interval of this nonlinear equation. जैसे आपने रेगुलर फॉल्सिंग मेथड में सबसे पहले इंटरवल चूज किया था, वो क्या था 2 to 3, वैसे ही आप इंटरवल चेक करेंगे इस नॉनलीनियर इक्वेशन का. वैसे ही आप देखेंगे कि ऑपोजिट साइन किस इंटरवल पे लाई कर रहा है और आप वो इंटरवल को कंसीडर करेंगे. फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पिछले मेथड में आपने इंटरवल को श्रिंक किया था बाय यूजिंग द सेकेंड लाइंस, बट यहाँ पे आप इंटरवल को श्रिंक नहीं करेंगे. आप अपनी जो ओरिजिनल नॉनलीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन होगी उसको आप मैनिपुलेट करेंगे. कैसे मैनिपुलेट करेंगे कि आप f of x को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द फॉर्म x इक्वल टू g of x. सो मैनी मैनिपुलेशंस हैं, जिसमें से एक मैनिपुलेशन ये है या ये होगी कि आप x क्यूब को एक साइड पे रख लें, बाकी को दूसरी साइड पे ले जाएं टर्म्स को, तो ये बनेगा 4x प्लस 5. दिस विल बिकम्स 4x प्लस 5 1/3. So look at this manipulation. This is your x basically, and this 4x plus 5 is your g of x. So you have did a algebraic manipulation on f of x and convert it to the form of the fixed point iteration. Okay, now find the approximate root. How do we find the approximate root? So basically अगला सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या यही एक मैनिपुलेशन है जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं x इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में? बहुत सारी मैनिपुलेशन है. आप 4x को इस साइड पे रख लें, माइनस 4x को बाकी टर्म्स को उधर ले जाएं, इस तरह से कर लें और x की वैल्यू निकाल लें. इस तरह भी आप कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, कोई इशू नहीं है. तो जिस तरह से
आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन द मोस्ट इजिएस्ट वे आई डिड दिस. ओके ओके. नाउ इम्प्लीमेंट द फार्मूला. You have the formula xk equal to g of xk minus 1, the most easiest formula. Basically I will definitely call this the most easiest formula. So you have xk equals to 4xk minus 1 plus 5 power 1 by 3. So now you have to do the first iteration. You have given the initial guess x naught equals to 1. You have given this the initial guess. Okay. Now put this iteration will be k starting from 1, 2, 3 and so on. Now put the value k equal to 1. This will x1. 4x naught plus 5 1 by 3. You have x naught is 1, so x1 equal to 4 into 1 plus 5 power 1 by 3. This will be 4 plus 5 power 1 by 3. This will be 9 power 1 by 3. So you will have x1 will be equals to 2.08008. Now find the next iteration. How do we find the next iteration? Put the value of k equal to 2 in this formula. You will find the x2 by using the previous iteration x1. So x2 will be 4x1 plus 5 power 1 by 3. Okay. Now calculate the value of x2. This will be 4 into 2.08008 plus 5 power 1 by 3. So this will be, you can calculate and simplify this. X2 will be 2.3704. Similarly, you can calculate x3. X3 will be 2.4374. You can keep going until you get your desired results. Almost possibly in the field of iterative schemes or numerical analysis, you can only do 5 to 6 iterations. That's enough for us. We will get our desired results approximately in the 4 to 5 or 6 iterations. So that's all for this lecture. Thank you very much.